Okay, very good evening to all. Just let me know. Am I audible? Screen is visible. Okay. I hope you guys are practicing on the question, whatever we are covering. Okay, so in our previous sessions, we are doing experiments and practicing on an image file, and we have seen some of the tools or some of the features on autopsy, right? How to create a image file using FTK measure and how to analyze those image file. But for analyzing the computer's memories and all, we have not tested, and I have asked to find out some of the usable image file and to practice on that. Okay, so you guys have practice on that. कंप्यूटर्स की जो भी मेमोरीज एंड एक्टिविटीज है उस पर कुछ किया आप लोगों ने? सुविधि, आपने लास्ट टाइम पे आपको जो सिनेरियो बेस्ड दिया था उसको डाउनलोड करके कुछ एनालाइज किया? यस सर सर, लेकिन केवल एक इमेज फाइल करिए। अच्छा, स्प्लिटेड वाले? यस सर। So any useful information you have found on that? सर सम गन्स फोटो एंड लाइसेंस डिटेल्स। Okay, so that means the person identifications हो गए उसके? Like what's the name of that person and what the planning and all, and कौन से नो guns सर। and all over the whole scenario कि उसकी क्या planning थी shooting के लिए? नो सर। No. So कब तक complete हो जाएंगे वो? इस पे मुझे रिपोर्ट चाहिए पूरी की पूरी. ओके सर, टिल सैटरडे। Okay. Give me 1 minute, guys. Okay, so here is a task I am sharing with you all, and we'll see the outputs on a basis of this, and we'll practice on the question tomorrow. Okay, कल हमारे इस पे जितने भी tools like हमारे इस पे रह गए हैं, like Incase, Autopsy, Winhex, so all over as in summary we'll discuss on that. So once you'll open that file, na, so you will find out here is a website, and here is a scenario based questions generally asked in any CTFs based on the forensics. Okay, so once you'll read this, so here are some details. Let me just go back. Okay, here are the scenario, and I have assigned a task for this particular scenario. Okay, so this is a scenario or a kind of test how you guys are practicing on these tools. So it's a kind of test, और इसमें मुझे reports चाहिए from each and individual one, like so that you guys are working on that. So scenario is that a scenario involving the seizure of the laptop of a fictional person planning a mass shooting, right? That means कि एक person से जैसा कुछ plan कर रहा है mass shooting करने के लिए, and as an investigator we have seized the laptops and we have found out and we have tested FTK measure and some of the investigation tools,
and we are having the image file of all these like disk memory, memory dump, and page file dot system analysis. Okay, so by using all these image files and the related information, so I have assigned only to analyze the data on a disk images only from here to here, not the memory dump and system memories. Okay, so try to analyze these image files as a whole. If you want to test, you can download singly the 15 GB of zip file that containing the disk images, or you guys are if downloading that particular 32 GB of file, so it contains the disk images and image memories too, right? Sorry, memories, RAM memories and all. So after analyzing all these things, we just have to create a report like what is that person planning, or like the identity of that persons, and what kind of guns that person is planning to use for that mass shooting. Okay, and other related informations like plans and path, route, strategies and all. So according to that, we just have to prepare a report, and सैटरडे ना तो ठीक है, सैटरडे और संडे को आप सबमिट कर देना मुझे। आई विल चेक आउट कि आप में से कितने लोगों के कितने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रखे हैं। एंड आफ्टर देन आई विल गिव यू अ पर्टिकुलर सिनेरियो जहाँ पे कि सेल फोन के डाटा एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए विल यूज सम ऑफ द अदर टूल्स लाइक सीडीआर और एसडीआर के बारे में आपने सुन रखा होगा, और यूजिंग द ऑटोप्सी वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट सी इसमें आपकी क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं, and thereafter from the next week we'll start the Windows forensics, जहाँ पे कि Windows registries and go on we'll start the network forensics and all. Is that clear till now? इसमें क्या करना है सबको? चैट बॉक्स में तो शेयर किया, फिर ग्रुप्स वगैरह में क्यों? ठीक है, let's just further proceed. Today we are going to see the Winhex, so just download and install the Winhex tool. And let's see what kind of features we are getting in a Winhex editor, or what kind of data we can retrieve. And you can see like here any kinds of file in any particular binary file: hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD, okay, smart media, compact flash, memory sticks, all other drives types accessible in Windows, even your computer's RAM too, right? So let's just see how this particular tool is useful, because we are like using and testing so many tools. So at the time of like CTF for examinations, you guys are better aware कि कौन से tools हम use करें जिसमें better results आएंगे. Sometimes for media and all data retrieving में ये tools उतना ज़्यादा useful नहीं होते हैं, but on the rest cases we can use these tools too. So let's just download this and let's just install. Click on setup and install. So here you guys can select the destination folder and the languages. So I'm choosing the destination as D drive. Click on OK. Okay, so this will be the first interface we will see whenever we'll install the Winhex. Let's just cut this. Let's just open it freshly. So I'll suggest for analysis of RAM or like other memory analysis now,
don't directly open this particular tool. Try to open with the administrator mode. ये आपको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? So if I'll open without administrator ना, तो what problem you guys will face? So there is the interface, and then if I'll go to the tools and then open memory, basically the older version if you guys are using, so it will shows as in RAM memory or RAM analysis kind of thing. But in this version, we are just seeing as an open memory. Okay, let's just click on open memory. And here you can see only with the admin rights, you can see the process name and the loaded modules. Only with the 64-bit editors, you can see this is kind of process. Okay, although like we will run as administrator, then also we'll see this kind of pop-up, but better result we can get. So let's just cut this. And open this as in run as administrator mode. Okay, so here is the scenario. Now, what are the tools and features we are getting? So click on file. And we are having these options like create disk images, restore images, backup, properties, open directories and all. So that means we can also create the disk images too, right? So here is the features. Let's just go to the edit, search, navigation. Okay, no options, view. Okay, these are some viewing methodology. So major features we just have to use, that is the tools. Okay, in tools we have these options like firstly, like for data retrieving. Let's suppose if this time I have inserted a pen drive. Let me just go back. And this pen drive. So some of the data are deleted and two data are there. Okay. So if you want to retrieve the data like SD card, pen drives, like all other secondary drives, we can retrieve and we can use this software. Go to tools and click on open disk. Okay. So once we'll click on open disk, it will show all the options like C drive, D drive, pen drive. Okay. So let's just click on this pen drive option, logical. Okay. So here are the details we are seeing. So we can clearly see now, like these data are available actually, but in an actual pen drive, we are not seeing all these data. Okay, only these two data are there. Okay, so here are the information, and let's just go to tools again. After selecting the logical disk, we just have to click on disk tool. Okay, and in disk tool, if you will see, we have these several options. So by using this, we can clone the disk too, right? Cloning options we are also getting in this particular tool. Explore recursively, file recovery type, take a new volume, this is this, initialize the free space, and all and all. Okay. So let's just go to the disk tools, and for retrieving the data, we have to click on file recovery and types. So by selecting the types, we can retrieve the data. So it's a good option, like what type of file we are just actually looking for. Like it may be image file, video file, or like other particular file. So click on OK. Once we'll click now, so we are getting these kinds of option. So like I'm expanding the picture option. You just have to select accordingly what type of file you are looking and you want to retrieve. So you can select manually like JPG, PNG or GIF or okay. So high efficiency this image and web image, this image. Okay. So other we can exclude. And in documents, all the related things. If you want like PDF or like this one and text and MS Office or any other text document. If you want to search for all, you can select.
whole like this. For a email, I'm selecting as an whole. But if you want to expand and select, we can individually select all. So for audio and video, we can select like this MP3 or like this one, audio, MPG, Blu-ray. I'm not selecting these all things because it will take some time. मैंने इसको पहले भी थोड़ा वो करा तो बहुत लंबा टाइम जाता है इसकी डाटा रिट्रीविंग प्रोसेस होने में. Okay, so go and okay, that's it. So in other options, if you want to apply the output path, you can apply from there. So go to D drive, and in D drive, I'm applying on Winhex folder. Okay. Okay, so this will be the output. Start a new subfolder after इतना files. ठीक है, चलो कोई नहीं. Okay, then click on OK. So it will take some time, and parallelly it will retrieve the data too in that particular directory. So like wait for 1 or 2 minutes, and then we'll see what kind of data it is just gathering. And if we have to analyze the hex editor or hex code of any particular files available there, so we can click there, and inside we have the hex editor, and in the right side corners we have the information related to those files. So last time right or the other informations we are getting in a right hand side, right? Let's wait for some time. So one file it has just discovered, or like these are the number of sector it is actually like analyzing. So while doing this process, parallelly we can do multiple tasks. So let's just go to the file. Okay, we can create a new case, open case, right? Let's just go to the tools again, and let's just click on open disk, or let's just go to the open memory. Okay, we have these processes running on this system like Chrome, runtime, this. Okay, if you want to go deep down into any of these, like let's just expand this, we can select primary memory, entire memory, or the user defined range. Okay. So parallelly, we can, oh, wait. Let's just click on tools and click on open disk. Let's just select C drive and let's see what data we are like getting. Click on OK. So parallelly in the upper side you can see हमारी अभी process चल रही है CHFI का, इसका एक ये open है, and Chrome we have opened and C drive we have opened. इसके analyzing करने में थोड़ी time लग रही है. Once it will traverse all the C drive, all the files and structures will be available here. And retrieving वाला भी अभी slow में चल रहा है. So let's just see. And E drive सभी सिर्फ यहाँ पे available हैं. So let's wait for some time.
डाटा रिकवरी में उतना भी यूजफुल नहीं होता है ये। अगर आपको अदर मीडिया रिकवर करनी है तो उसके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट वगैरह को काफी बेहतर रिट्रीव करता है, बट इन मीडिया इट इज क्रिएटिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स जस्ट गो बैक एंड लेट्स सी डी ड्राइव पे कुछ फाइल्स आ रहे हैं या नहीं। D drive, and we have to go to Winhex. Okay, yeah, we are getting some of the files. These are the pictures we have, और कुछ कुछ और चीजें भी ये अदर फाइल टाइप्स रिट्रीव कर रहे हैं। So let's see. Okay, in C drive we have these files location. Okay, path unknown, root directories, and these are the system file informations. Let's just go to any particular user. Let me just open any of this file and let's see कुछ यूजफुल information मिल रहे हैं या नहीं। Okay, in these folders we are getting all these things. So this time we are not getting the deleted files from this drive. So once you are selecting any logical drive, then after we just have to apply the retrieving method. So इस टाइम पे डाटा रिकवरी हमने सिर्फ किसमें अप्लाई किया है? We have only applied to the E drive और जो भी पेन ड्राइव थे उसमें। So after selecting and traversing the C drive, we have to apply for the retrieving methods using uh, data recovery file types and all and all. So once you have chosen the disk, we have to apply the disk tools and file recovery by type. इसको अप्लाई करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उसको देखना, बिकॉज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है दिस इज जस्ट informations related to all the files and all. Let's just open any one. We have clicked on this document. इसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मॉडिफिकेशंस एंड लोकेशंस एंड द अदर इन्फॉर्मेशन जो कि सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके हेक्स कोड से भी फिलहाल तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। समटाइम्स in a CTS they are just hiding some of the text informations in a hex, तो उस टाइम के लिए आपको इसको पूरा का पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए ओके, नो अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, और ये रिकवरी वाले प्रोसेस काफी लंबे लग रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई ऑन एनी स्मॉल पेन ड्राइव मेमोरीज और यू कैन एड ऑन एनी इमेज फाइल टू। आप डायरेक्टली किसी इमेज फाइल को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गो एंड सी व्हाट अदर इन्फॉर्मेशंस वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? In tools, open disk, no. Create disk image, we can directly click, and in disk image, or FTK imager, or in case we are using, you can directly choose this 29 GB we have selected. So इसकी इमेज फाइल भी हम यहाँ से बना सकते हैं पैरेलली। Once we'll click on OK. Okay, sector receiver is demanding. Give me 1 minute.
Scope sector we have to fill. If you click on clone disk, we have these options, entire disk, and we have to select the raw image file, and then we can clone in any particular drive. ये इतना स्लो क्यों हो गया? कट भी नहीं हो रहा. वन फाइल वेयर रिकवर्ड दिखा रहा है बस. कट करते हैं, दोबारा से करते हैं. स्मॉल पेन ड्राइव एंड स्मॉल इमेज फाइल पे एक बार अप्लाई करके देख लेना. टेक न्यू वन. ओके. वापस से इसको ओपन कर लिया. लेट्स जस्ट क्लिक ऑन टूल्स एंड डिस्क. Start sector this tools and then file type. Okay. इसमें भी टाइम लगेगा. एक बार करके देख लेना. 32 minutes approx. It is just showing to retrieve the deleted file. Okay, nothing. So basically these are the features we can apply. ये तो अभी काफी टाइम लेगा. So if there is anybody who have used the in case, Winhex का यही था. एक बार आप खुद से इसको अप्लाई करके देख लेना. ओनली द प्रैक्टिकल्स. आप इसमें मेमोरी को एनालाइज करना. अभी अप्लाई करेंगे तो एक 2 घंटा लगेगा. एंड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसेस ये 100 GB 200 GB वाले कितने मेमोरीज को मैं अप्लाई करके नहीं देख सकता इसमें. तो जिनके पास होंगे आप अप्लाई करके इसको एक बार देखना. अदरवाइज विल हैव टू ऐड ऑन सम ऑफ द आउटसोर्स मेमोरी और इमेज फाइल एंड देन वी कैन एनालाइज दोज थिंग्स. ओके. इसको सुविधा को दिया था. सो आई गेस उसमें बेटर एनालिसिस और प्रैक्टिस हो रही होंगी. लाइक इन रियल लाइफ सिनेरियो वी आर गेटिंग द एविडेंस. तो उसको आप डाउनलोड करके अभी प्रैक्टिस करेंगे जो शेयर किया है मैंने. तो उस पर आपको बेहतर समझ में आएगा.
नाउ इन केस किसी ने किया है अभी तक यूज, इन केस फॉर द सेम वी कैन अप्लाई। ओके, सारे बाकी लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो इन केस मैं भी फाइंड आउट कर रहा था सेशन से पहले, बट मुझे मिला नहीं। सो दैट्स वाई हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक की सेशंस को होल्ड पे रखते हैं। टुमारो विल सी जो आपको दिए गए हैं प्रैक्टिकल्स करने के लिए, एनालाइज ऑन दैट। तो आज के सेशंस में आपको टाइम मिल रही है, उसमें आप प्रैक्टिस करो। टिल दैट हम किसी दूसरे इमेज फाइल पे कल एक लास्ट समरी देखेंगे, सारे जो आउटसोर्स वाली इमेज फाइल है उसको क्रिएट करके। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं एक बार क्वेश्चंस भी देख लूंगा, क्वेश्चंस में और क्या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। कल अब मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। ढूंढना पड़ेगा मुझे, नॉर्मली गूगल पे ऊपर ऊपर तो दिखा नहीं इन केस वगैरह का, दूसरे कहीं से ढूंढना पड़ेगा। इन केस अगर किसी के पास हो तो ढूंढ लेना, अगर किसी को मिल रहा हो तो मुझे भी शेयर आउट करा देना। लगेगा 1-2 घंटा ढूंढने में उसको। ओके, ओके गाइस, बाय बाय। कल मिलते हैं वापस सेम टाइम पे।